सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो है शोल्डर की वर्कआउट करने वाले हैं। जो मेरी खुद की अपना जो पर्सनल वर्कआउट है वही मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। और बोलते हैं ना कि भाई 3D शोल्डर तो भाई ये सब जो बोलते हैं ना 3D शोल्डर, इसी की वर्कआउट करने वाले हैं। तो बाद में हम लोग दिखाएंगे आप लोग को कि मेरा जो ये एरिया है ना, जो शोल्डर की एरिया है, इसमें कितने जो है फाइबर दिखते हैं आप लोग को, वो भी आगे आप लोग को देखने को मिल जाएगा वर्कआउट के दौरान। और जितना भी है हम लोग जो है शोल्डर को पूरा टारगेट करेंगे, फ्रंट मिडिल और बैक और जो है ट्रैप, तीनों चारों वो जो है टारगेट करेंगे। पार्ट बाई पार्ट जो है हम लोग उसको जो है वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और आशा करता हूँ ये वाला जो वर्कआउट है आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। और चलते ही बिना टाइम से अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, फिर जो है पंप करवाते हैं शोल्डर को। फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ ये जो 3D एरिया बोलते हैं ना, तो 3D शोल्डर कैसा होता है, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा बहुत पहले हम लोग जो है अपना बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, फिर जो है अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा बहुत जो है स्मिथ मशीन से अपना जो भी शोल्डर है तो उसको थोड़ा मैं वार्म अप कर लेता हूँ। फिर जो है अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। फिर पहले हम लोग जो है डंबल प्रेस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे बाकी की वर्कआउट जो है करेंगे, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा बहुत जो है तो शोल्डर अपना पंप हो गया है। और बाकी की जो वार्म अप है हम थोड़ा थोड़ा जैसे शोल्डर को मूवमेंट करेंगे, और फिर जो है धीरे धीरे सारे जो वर्कआउट है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आगे इसके आगे वॉइस ओवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरा ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ पूरा वॉइस ओवर करने की, ठीक है। अगर वॉइस ओवर करता हूँ तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आप लोग देखोगे नहीं इतना लंबा, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं, सारे वर्कआउट धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, फिर जो है अपना जो भी है वो देखेंगे, ठीक है।
fly, go. And fly, go. And fly, go.